Here we was discussing the heart. This is overall the structure of the heart. Now let's P-3 से हम ओवरव्यू लेते हैं. देखिए सबसे पहले हमारे पास बॉडी है जो कि ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से वापस ब्लड लेकर आएगी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी से वापस ब्लड लेकर आएगी, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन वापस आएगी. ये सारी जो है अपर बॉडी रीजन जो है ब्लड सुपीरियर वेना केवा में कलेक्ट करेगा. सुपीरियर वेना केवा में कलेक्ट करेगा. From here, blood will come through superior vena cava into our first chamber of the heart, that is right atrium. That is right atrium. Same as it is dorsal aorta providing the blood to lower body parts from the heart to lower onward. From lower body parts, inferior vena cava will also taking deoxygenated blood into right atrium. Here is deoxygenated blood is represented by glucular, from which is taking blood from upper body region and lower body region, inferior vena cava and superior vena cava taking blood into our first chamber whose name is right atrium. From right atrium, blood will enter into a second chamber whose name is right ventricle. Right ventricle. And from right ventricle, if we say that there is a valve is present here. This valve is known as a tricuspid valve because it has three flaps. इसे हमने क्या नाम दिया? Tricuspid valve कहते हैं. जिसके तीन valves होते हैं, मतलब इसके तीन flaps हैं, एक इस तरह से, एक इस तरह से, ये इस तरह से अटैच हो गए. Same as this third है, जिसमें से blood ऊपर से enter हो रहा है और नीचे निकल रहा है. अब ये जो है, इनको flaps को maintain करने के लिए, means इन flaps को maintain करने के लिए इस तरह से ये flaps हैं. अब ये फ्लैप्स के डाउनवर्ड स्ट्रिंग्स हैं जिनको हम हार्ट स्ट्रिंग्स यानी कॉर्डी टेंडनी कहते हैं, जो कि पेपिलरी मसल्स के साथ अटैच हैं इन द वेंट्रिकल्स. सेम एज दिस, these red colors is representing the papillary muscles because it's like a pimple. पिंपल की तरह के हैं, इसलिए हम इसे पेपिलरी मसल्स कहते हैं. इनके साथ हार्ट की स्ट्रिंग्स अटैच हैं जिन्हें हमने कॉर्डी टेंडनी कहा, हार्ट स्ट्रिंग्स. अब ये हार्ट स्ट्रिंग्स इन फ्लैप्स को, इन वाल्व को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करती हैं कि ये ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना हो. मतलब कि ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में इंटर हो रहा है तो वाल्व्स जो हैं these will become hurdle, रुकावट बन जाएंगे. मतलब कि ये ब्लड को वापस नहीं जाने देंगे अगर एक दफा उसमें आ गया. राइट. अब यहां से ब्लड अगर हम देखें तो राइट एट्रियम से ब्लड किसमें आ रहा है? राइट वेंट्रिकल्स में इंटर हो रहा है. From right ventricles, blood will go back. ब्लड यहां से इंटर होगा इस A पोर्शन में. A मीन टू से यहां पर हम बात करते हैं पल्मोनरी ट्रंक की. मतलब कि ब्लड विल इंटर इनटू पल्मोनरी ट्रंक. पल्मोनरी ट्रंक के आगे एक वाल्व लगा होता है जिसको हम पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व कहते हैं. सेमील्यूनर जो कि हाफ मून शेप होता है, इसलिए हम इसे सेमील्यूनर कह रहे होते हैं. सो ये सेमील्यूनर पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व यहां पर लगा होता है. ब्लड जैसे इसमें इंटर होता है तो ये वाल्व भी ब्लड को बैक फ्लो से प्रिवेंट करता है, मतलब ब्लड को वापस नहीं आने. यहां तक हमने अभी कहा सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, these both taking blood from upper body parts, lower body parts and opening into our first chamber whose right atrium. Whose right atrium. From right atrium, blood will enter through tricuspid valve into right ventricle. From right ventricle, blood will enter into pulmonary trunk, which is divided into two: the left pulmonary artery and the right pulmonary artery. That is the left pulmonary artery and right pulmonary artery. And these will drain blood into lungs. ये blood किसमें drain करेंगे? Lungs में drain करेंगे. From lungs, it will become oxygenated. When it will become oxygenated, it will be taking back. Lungs से वापस ले लिया जाएगा. जैसे lungs से वापस लेंगे, that will be left pulmonary vein. कौन सी? Left pulmonary vein. There is blood color is changed. From blue to it become red. Red representing the oxygenated blood.
इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड through left pulmonary vein, which is 2 and become 1, into drain blood into left atrium. मतलब लंग से ब्लड किसके थ्रू, लेफ्ट पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट सेम एज इट इज राइट एट्रियम में, सॉरी लंग से राइट पल्मोनरी वेन से, दो राइट पल्मोनरी वेन्स हैं जो ब्लड किसमें लेकर आ रहे हैं, लेफ्ट एट्रियम में। मतलब नंबर 1, ब्लड फर्स्ट एंटरिंग राइट एट्रियम through body upper and lower parts, then cava, from here coming into right ventricle, from right ventricle it's going into lungs, from lungs it's coming back into heart in left atrium, which is the third chamber of the heart. From left atrium it's entering into fourth chamber, which is left ventricle, and through bicuspid valve, it's also known as AV, atrioventricular valve. It's also known as a mitral valve. इसको हम क्या नाम देते हैं, mitral valve नाम देते हैं, right? Up from here, it's coming and entering into B, mean to say aorta, aortic trunk में enter हो रही है. Aortic trunk will further come back and make aortic arc. ये क्या बनाएगा, aortic arc बनाएगा. ये एओर्टिक आर्क जो है, अब जहां से ऊपर की तरफ 3 आर्टरीज अराइज होती हैं, which is taking oxygenated blood to brachiocephalic trunk, oxygenated blood to left pulmonary carotid artery and left subclavian artery. From here, deoxygenated will come back into superior vena cava. So here is the blood flow. From here it's going to upper body parts, and from here it's going to left body part. Here is one thing. अब देखिए इसमें ये जो हार्ट होता है, इसमें हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं. एट्रिया ब्लड पंप कर रहे हैं वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स ब्लड पंप कर रहे हैं आउटसाइड द हार्ट. From left right ventricles it's pumping blood into lungs, and same as it is left ventricle pumping blood into body. Here is the much force is exerted by left ventricle. So left ventricle valve is thicker as compared to right ventricle. It's much strong because it needs much energy to pump blood into body. So it has thicker valve as compared to 3:1 ratio. Mean to say ये 3 times much thicker है. इसमें फोर्स जो होती है वो 3x या 3 times जो होती है ये thicker होती है as compared to left side, as compared to right ventricle valve. और इसका साइज भी छोटा होता है as compared to right ventricle because it has to pump to all the body. सारी बॉडी में इसे पंप करना पड़ता है, ब्लड को पंप करना पड़ता है. So that's why इसका साइज भी छोटा है. ठीक है. इसके साथ साथ में अगर हम देखें तो ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके अंदर भी पेपिलरी और एक्वाटिक टेंडन जो होती हैं मौजूद हैं. सो इन दिस वे ब्लड इज फर्स्ट ऑफ ऑल pumping to lungs and then pumping to body parts. In this way we can say that blood is a double pump, working as double pump. The one is from right ventricle to lungs and left, the other one is, second one is left ventricle to body parts. Here is, take another overview later to this one. Here is to atrium, here is to ventricle, here is to ventricle. Atrium is upside, from here blood is entering into it, atriomic entrance. This ventricle, from here blood is exiting to the heart से निकल रहा है. So इससे हम कह सकते हैं एट्रियम से ब्लड एंटर होता है, वेंट्रिकल से ब्लड हार्ट में बाहर मूव कर जाता है. राइट. अब यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पे इसमें जो वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो सेप्टम है, इस सेप्टम को हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कह सकते हैं. क्या नाम दिया? Interventricular septum. Means this septum, this layer which is present between two ventricles, this layer, this septum is known as
इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको हमने इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का नाम दिया। Same as it is, the septum present between the two atrium, this is known as interatrium septum, जो कि septum interatria के दौरान मौजूद होती है, right? From अब यहाँ से देखिएगा same as it is, इसमें हमारे पास ये भी valve दो हैं, semilunar valve भी दो हैं। Semilunar valve जो है these are